Tasneem news agency, citing the local emergency services, reported that more than 400 people were injured and were transferred to Hardeep hospital. Mumbai Police Crime Branch officials questioned 26/11 attack mastermind Tahawwur Rana at the National Intelligence Agency office in Delhi. In a continued crackdown following the Pahalgam terror attack, security forces and Jammu and Kashmir authorities demolished the house of another suspect linked to the assault that left 26 people, mostly tourists, dead and several injured. In a stern warning amidst growing concerns over social media posts related to the recent Pahalgam terror attack, Assam's Chief Minister on Saturday announced that the state government will invoke the NSA against individuals found directly or indirectly supporting Pakistan. A Pune court has summoned Congress leader Rahul Gandhi in a defamation case relating to his remarks on freedom fighter V.D. Savarkar. Now the news in detail. An explosion was reported at Shahid Rajai port in the Iranian port city of Bandar Abbas, more than 1,000 kilometers south of the capital Tehran on Saturday. The Tasneem news agency, citing the local emergency services, reported that more than 400 people were injured and were transferred to the Hormozgan hospital. There was no immediate information about the cause of the blast. Iran's customs authority said in a statement that Saturday's explosion occurred in the Sina container yard, which is affiliated with the Ports and Maritime Organization. National Iranian Petroleum Refining and Distribution Company issued a statement following the blast, saying oil facilities in the area were not affected by the blast. The company said that the explosion and fire in Shahid Rajai port have no connection to the refineries, fuel tanks, distribution complexes and oil pipelines related to the company. Earlier, Hormozgan Ports and Maritime Administration official Ismail Malekizadeh said the explosion took place near the Shahid Rajai port dock. In a continued crackdown following the Pahalgam terror attack, security forces and Jammu and Kashmir authorities have demolished the house of another suspect linked to the assault that left 26 people, mostly tourists, dead and several injured. According to officials, the house of terrorist Shahid Ahmad Kutte in Chotipura village in Shopian district of Jammu and Kashmir was allegedly linked to a terrorist believed to be involved in the April 22nd attack. He has been active since 2002. In a separate action, authorities also demolished the house of another suspect identified as Zakir Ahmad Ghani at Mutalhama village in Kulgam district. Ghani is believed to have played a role in the Pahalgam terror attack, which has sparked nationwide outrage. Officials said Ghani had been active in terror activities since 2023. Early on Friday, the house of Lashkar-e-Taiba terrorist Adil Thoker, also known as Adil Guri, was demolished. Adil Guri, a resident of Guri village in Bijbehara block of Anantnag district of Jammu and Kashmir, is believed to have been involved in a Pahalgam attack that killed 26 people, including a Nepalese national, mostly tourists. He has been declared the most wanted, and the Anantnag police have offered a reward of ₹20 lakh for any specific information leading to his arrest. 2 Pakistani nationals were also declared most wanted in this case. Adil had illegally travelled to Pakistan in 2018, where he reportedly received terror training before returning to Jammu and Kashmir last year. The family of one of the terrorists allegedly involved in the Pahalgam attack, whose house was demolished on Friday morning, has called him a mujahideen. मेरा नाम यास्मीना है। हमारे घर में मेरे भाई एक है, वो जेल में है, और दूसरा भाई जो है वो मुजाहिदीन है, और मेरी 2 बहनें हैं और एक माँ बाप हैं। बस कल हम बैठे थे इधर, परसों से मेरे घर वालों को ले जा रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं था, मैं ससुराल में थी, मुझे पता नहीं था।
तो मुझे कल डॉक्टर के पास आना था, तो मैंने घर वालों को फोन किया, मैं उधर आऊंगी। मैं यहाँ पे जब आई तो यहाँ मैंने किसी को नहीं पाया, ना मेरी माँ थी यहाँ, ना कोई घर में कोई था ही नहीं। 6 बजे मैं यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पे कोई नहीं था। उसको पुलिस वाले उसको ले गए थे, मेरी माँ को भी ले गए थे। तो ऑलरेडी मेरी जो बहनें 2 थी और मेरे अबू वालदेन साहब जो थे, उनको क्या 3 दिन पहले ही उनको ले गए थे वो। तो फिर क्या हुआ, मैं यहाँ पर बैठी थी, सिक्योरिटी फोर्सेस जब आए उन्होंने हमें सबको निकाला बाहर दूसरे नेबर्स के घर में। उन्होंने बोला कि आप सब वहां जाइए, यहाँ पर जो भेड़ बकरियां सब कुछ ये जो है घर में वो सब निकाले। सब कुछ निकाला, लेकिन मैं देख रही थी वहां से, मैं ये जो हमारा ये है यहाँ से मैं देख रही थी कि वो एक बंदा यहाँ से चढ़ा, हमारे यहाँ पे जो ये थे मतलब घर का वो स्टोर होता था वो वहीं पे चढ़ा। उसने कुछ रखा वहां पे, एटमी बम रखा, कुछ वो जो ब्लास्टर उन्होंने किया वो रखा उसने। मैंने खुद देखा एक आदमी को, लेकिन अंधेरा था, मैंने उसको देखा नहीं, चेहरे से नहीं देखा, लेकिन देखा किसी एक को मैंने फौजी वर्दी पहनकर उसको मैंने देखा था यहाँ पे जाते हुए। फिर जब उसने क्या किया, जब हमने हमारी जो घर की चाबियां थी वो हमारे इसके पास थे, मकदम के पास थे, मकदम को लाया गया करीबन 10 के करीब 10-12 के करीब उसको लाया गया। तो उसने क्या किया, उसने उनको चाबियां दी, फिर उन्होंने खुद मतलब एटमी वो कुछ था उन्होंने वो फोड़ा, तो फिर सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो गया। आपके घर में कौन कौन सा अरेस्ट है इस टाइम इस वक्त? मेरे घर में मेरी बहनें 2 हैं जो अनमैरिड है, और मेरे वाले साहब और मेरी माँ। पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसके बारे में आपका भाई का कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या लग रहा है आपको? हमें कुछ पता नहीं है, वो जाने, सरकार जाने, उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है, वो हमारे भाई को पकड़े, कहाँ से वो पकड़ेंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम घर वाले बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, हम इनोसेंट है। हमारे घर में जो भी ये पूरी बिल्डिंग है, ये 4 मतलब चाचा मेरे 3 चाचाओं के हैं, 2 कमरे सिर्फ हमारे हैं इसमें। तो इन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है हमारा सब कुछ। उनको थाने में बांध रखा, लेकिन हमें क्या किया, उन चारों को बांध रखा। घर में कोई नहीं था, यहाँ पे पता नहीं फिर क्या किया इन्होंने, आप खुद देख सकते हैं, इन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है यहाँ पे। Meanwhile, a house belonging to terrorist Ehsan ul Haq Sheikh of Muran, Pulwama was demolished by the authorities yesterday late night. Yesterday, houses of 2 terrorists, Asif Ahmed Sheikh Tral and Adil Thokar Bijbhera, were demolished after the involvement in the Pahalgam attack came to fore. Heading on to the next news, Union Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Puri, while attending the Rozgar Mela event held by the Income Tax Department and Amity University in Mohali, reacted sharply to Pakistan People's Party Chairman Bilawal Bhutto Zardari's "either water will flow or blood" remark over Indus River, stating Bilawal should jump in the water somewhere, and further adding more insult to injury by saying, where will he jump when there is no water? Further commenting on the recent Pahalgam terrorist attack, the minister said that terror attacks are against the right to life and that the attacks are by a country which uses terrorism as an instrument of state policy. He said that the attacks need to be condemned in the strongest possible terms and that they will receive a befitting reply. अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी होता है that the overall atmosphere which allows for economic growth and development that is there. और ये जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट नहीं है, इट इज अ टेररिस्ट अटैक। इसमें किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये कोई उसको परिभाषा गलत हो रही है। इधर ये क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट है, अनलीश्ड बाय अ नेबरिंग स्टेट, और उनको इसका पूरी जिम्मेवारी तो उनके लोग ले रहे हैं। मैंने भी देखा, उनके एक शायद रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अपना एक बयान दिया कि हम कई 30 साल से ऐसा काम करते आ रहे हैं और इसका दे हैव टू पे अ प्राइस फॉर इट। पर अनलाइक पहले क्या होता था, जो पहले की सरकारें होती थी, होता था फिर थोड़ी सी वो लोग थोड़ी सी बैक ट्रैकिंग करते थे और फिर हम बिजनेस एज यूजुअल। इस बार कोई बिजनेस एज यूजुअल होने वाला नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आप
बयान देखिए जो उन्होंने बिहार में भी कहा, इसका वंस एंड फॉर ऑल पाकिस्तान विल हैव टू पे अ वेरी हैवी प्राइस। और अभी तो ये शुरुआत हुई है, क्योंकि ये जो टेररिस्ट होते हैं दे टेक अवे द मोस्ट फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, विच इज द राइट टू लाइफ। इनोसेंट लोगों को ऐसे लाइन में खड़ा करके उनका रिलीजन पूछ के ऐसे करना, इट्स अ हाईली कंडेमनेबल। और इसकी कंडेमनेशन सिर्फ भारत का हर एक नागरिक नहीं कर रहा है, ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड अब सब देखिए, ऑल कंट्रीज आर कंडेमिंग इट। एंड आई थिंक पाकिस्तान इज नॉट जस्ट अ रोग स्टेट, इट इज अ कंट्री इन टर्मिनल डिक्लाइन। मैंने देखा वो बड़ा उसकी बुद्धि, उसने कहा कि पानी नहीं मिलेगा तो खून बहाएगा। तो उसको बोलो यार अपना खून जाके कहीं छलांग मार ले, इसके यार पानी में नहीं मिलेगा तो कहाँ छलांग भी कहाँ मारेगा। छोड़िए बेवकूफ़ी की स्टेटमेंट। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको डिग्निफाई मत करिए। एक और आंटी है वहां पे, वो क्या नाम है, शेरी रहमान, उसने भी कोई बेवकूफ़ी की स्टेटमेंट दी। तो आप उनको डिग्निफाई मत करिए, इनको पता नहीं व्हाट इज हिट देम। तो अभी जरा दे विल गेट टू अंडरस्टैंड दैट। देखिए जब कोई भी स्टेट सिस्टम, इंडिविजुअल जो भी करे, बट स्टेट जो है अगर वो इस लेवल पे डिसेंड कर जाए, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, समझे ना। ये कोई इंडिविजुअल नहीं है किसी की मुझे आपसे नाराजगी है और हमारी कोई आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसमें कुछ हिंसा हो गई, नहीं। दिस होल स्टेट इज गॉन इनटू टर्मिनल डिक्लाइन। और इसका अभी मैं समझता हूँ कि पिछली सरकारें जो हमारी रही है, उन्होंने इसको, द टॉलरेंस लेवल वाज वेरी हाई। इस समय आई थिंक वी हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर दे विल हैव टू पे अ प्राइस। In a stern warning over growing concerns over the social media posts related to the recent Pahalgam terror attack, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma on Saturday announced that the state government will invoke the National Security Act against individuals found directly or indirectly supporting Pakistan. The Chief Minister said that at least 9 people have been arrested by the Assam police so far in an intensified crackdown against those expressing pro-Pakistan sentiments following the attack in Jammu and Kashmir's Pahalgam on Tuesday. Among the 9 arrested, 6 were taken into custody on Friday. 2 others, including an MLA from the All India United Democratic Front, an opposition party in Assam, were detained on Thursday. One more individual was arrested from Hajo earlier today. Meanwhile, similar actions have been reported from neighboring states. In Meghalaya, 1 person has been arrested for allegedly praising the Pahalgam attack. In Tripura, 2 people have been detained for objectionable social media posts related to the incident. যিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট আহিছে আমি পৰীক্ষা কৰিছো, যিটো পোষ্টে ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী বুলি আমি ভাবিছো তেওঁলোকৰ ওপৰতে আমি एक्शन लम। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा उनका ऊपर हम एनएसए भी लगा देंगे। We'll be right back after a short break. अरे अरे रुको, खाने को एक ही तेल में बार बार तलने से पहले रुको। ये आपकी तंदुरुस्ती और वातावरण दोनों के लिए खतरनाक है। ऐसे तेल से आपको कई खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इसी तेल को कई बार फिर इस्तेमाल के लिए बेचा जाता है, जलाया जाता है या नाली में बहाया जाता है। पर अब रुको, रीपर्पस्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल योजना में इसी तेल से बायोडीजल बनाया जा सकता है। इसलिए रुको, जिससे आप और आपका वातावरण दोनों फिट रहें। Every day goes through 136 quality checks, giving you a thick and tasty, perfect cup of tea. No wonder Nestle Every Day is your #1 choice. Every day goes through 136 quality checks, giving you a thick and tasty, perfect cup of tea. No wonder Nestle Every Day is your #1 choice.
Welcome back after the break. Let's continue with the news. 4 people were arrested in Delhi on Saturday for impersonation in the CBSE examination. According to additional DCP Achin Garg, the police got the information that somebody was trying to impersonate a candidate in the exam for CBSE's junior assistant and superintendent. Police identified the impersonators and busted the whole racket. 4 people were arrested in connection with this case. DCP said a man named Sachin, who is a graduate, was hired by one Nitin with the help of another man, Shyam Sundar. They made a deal of rupees 15 lakhs. सीआर पार्क थाने के अंदर एक इन्फॉर्मेशन आई थी सीबीएसई का जो जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट का एग्जाम है उसमें कोई इम्पर्सोनेट करने की कोशिश कर रहा है। इसी पर कार्रवाई करते हुए सीनियर ऑफिसर्स के निर्देश पे सीआर पार्क की टीम ने लेड बाय एसएचओ वंदना सुपरवाइज्ड बाय एसीपी सीआर पार्क, इनकी टीम ने बहुत अच्छा काम करते हुए इन इम्पर्सोनेटर्स को आइडेंटिफाई किया, उनको पकड़ा और पूरा जो रैकेट था जिस तरीके से वो इम्पर्सोनेशन की कोशिश कर रहे थे उसको बस्ट किया है। सर कितने लोग पकड़े हैं और इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या हुआ करती थी, कैसे ये एग्जाम देते थे? टोटल अभी तक इस केस के अंदर 4 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं और अभी की इन्वेस्टिगेशन चालू है। जो मोडस ऑपरेंडी था वो पहले ये फॉर्म भरते थे और मिलती जुलती शक्ल के जो लोग होते हैं उनसे ये एग्जाम दिलवाने की कोशिश करते थे। तो सचिन करके एक बंदा है जो कि पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, वो एग्जाम्स क्लियर करने की कोशिश करता था और नितिन करके एक लड़का है, उसने उसको श्याम सुंदर के माध्यम से उसको हायर किया था। 15 लाख का सौदा इनका हुआ था जिसके बेस पे इनकी कोशिश थी कि इस एग्जाम को क्लियर करा दिया जाएगा। हाउएवर दिल्ली पुलिस की टीम ने बहुत ही अच्छा काम करते हुए इस अंजाम को रोक दिया और इनको अरेस्ट किया। सर एग्जाम देने के टाइम क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी यूज होती थी और आखिर किस तरह से उस डिवाइस का यूज करके ये इन एक्यूज्ड से अभी तक हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी मिले हैं जिसके अंदर लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, जीएसएम डिवाइसेस, ईयरपीसेस, बैटरीज, इवन उनकी कार जो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहे थे वो सारी दिल्ली पुलिस ने जो सीआर पार्क थाना है उसने रिकवर की है। तो उसका जो रोल है वो यही रहता था कि एग्जाम के अंदर ये लोग बाय फोन इसको यूज करते थे आंसर्स वगैरह जानने के लिए, क्वेश्चंस बताने के लिए। तो ये एक पूरा एक मोडस ऑपरेंडी है जो कि बस्ट हुआ है। तो सचिन अंदर एग्जाम देता था, क्या उसके साथी एग्जाम सेंटर के बाहर उसको बताते थे कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर देना है, ये पूरा क्या प्रोसेस? तो इस केस के अंदर वो अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है कि किस तरीके से ये एग्जाम दे रहा था, क्योंकि सचिन भी ग्रेजुएट है, उसको भी आंसर्स पता हैं। तो हो सकता है कि वो पहले से ही तैयारी करके आया हो एग्जाम की और इस नितिन के बिहाफ पर वो एग्जाम लिखकर उसको क्लियर कराने की कोशिश कर रहा होगा। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है इस केस के अंदर कि क्या रोल रहा है, किस तरीके से इक्विपमेंट्स हैं वो यूज हुए हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है अभी। A Pune court has summoned Congress leader Rahul Gandhi in a defamation case relating to his remarks on freedom fighter V.D. Savarkar. The court has requested that Rahul Gandhi may be present on May 9. The case was filed by a relative of V.D. Savarkar against Rahul Gandhi after he made a statement about the freedom fighter in London some time back. Gandhi had said that Savarkar and his friends beat up a Muslim and felt happy. If 5 people beat up one person and someone is getting happy, then this is cowardice. 15 people with Savarkar ji are beating one person. This is also in their ideology. In another case against Rahul Gandhi over the same issue, the Supreme Court on Friday warned the Congress MP not to make controversial remarks against freedom fighters in the future. Otherwise, he will have to face consequences. Ranjit Savarkar, grandson of Veer Savarkar, commenting on the issue, said on Saturday that any intelligent person can understand that Veer Savarkar, who was kept in jail for 27 years by the British, cannot be an accomplice or a servant of the British. The Supreme Court rightly told Rahul Gandhi that by the same standard, he should oppose Mahatma Gandhi too, as he too also used to sign his letters as most obedient servant. He alleged that Rahul Gandhi deliberately opposes Veer Savarkar as he stands for Hindutva. देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही कदम उठाया है क्योंकि ये सीधे सीधे समझदारी की बात है। जिसे कोई भी जिसे समझदार आदमी हो वो जानेगा। जिस आदमी को 27 साल ब्रिटिशों ने जेल में रखा, 14 साल उनको कारावास में रखा, भारत में आने के बाद तो उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें 6 बाय 8 फीट के कोठरी में रखा गया था 3 साल के लिए।
अंडमान में 11 साल रखा था, उसके बाद 13 साल उनको हाउस अरेस्ट में रखा था। ऐसा आदमी ब्रिटिशों का दोस्त या नौकर कैसा हो सकता है ये? और एक लेटर के इसमें यूर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा इसमें इनको पकड़ा है कि भाई महात्मा गांधी को भी फिर बोलना चाहिए, वो भी मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट लिखते थे, वो तो उस समय का तरीका था लिखने का। तो ये बड़ा सही काम किया है जो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अभी ऐसा मत करो और सो मोटो लेंगे। मुझे लगता है कि अगर समझदार होंगे तो सुधर जाएंगे। मगर इसमें एक बात देखने की कि राहुल गांधी ये जो कुछ कर रहे हैं ये ऐसा इसलिए नहीं कर रहे वो बेवकूफ है, वो इसलिए कर रहे हैं कि सावरकर ये हिंदुत्व के प्रणेता है। सावरकर जी का हिंदुत्व धर्म के आधार पे नहीं है, पूजा विधि पे आधार पे नहीं है, ये सब जानते हैं। फिर भी हिंदुत्व शब्द था, इसलिए वो पोलराइजेशन ऑफ मुस्लिम वोट्स ये जानबूझ के इलेक्शन के पहले, हर इलेक्शन के पहले महाराष्ट्र में आके जे भी जाएंगे, कर्नाटका जाएंगे, वहां पे ये जानबूझ के ये सब बात करते थे क्योंकि उन्हें इनकी सत्ता की राजनीति का एक हिस्सा है वो। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई सही है कि हम देशभक्तों का उपयोग अपमान ना करें, कम से कम आज की सत्ता के इसमें। तो लगता है मुझे कि वो सुधर जाएंगे, सुधरे तो ठीक है। मगर ये जो बात थी कल लखनऊ के केस के बारे में थी, उसके ऊपर 3 केसेस और शुरू है, एक नासिक में शुरू है, पुणे में शुरू है। पुणे में मेरा भाई सत्य की केस कर रहा है, मैंने खुद बंबई में भी एक केस 4 साल से रजिस्टर की, वो भी आ जाएगी अभी। तो अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो हमने प्रण कर लिया कि उन्हें हम जेल नहीं भेजेंगे। नहीं, किसी ने अभी मांग नहीं की है, हम क्यों मांग करें, अमेलगमेट करें। मेरी केस अलग है, हर केस अलग अलग विषय पे है। मेरा केस में है कि राहुल गांधी ने सावरकर जी को गद्दार कहा था ट्विटर पे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी अध्यक्ष थी, राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे उन्हें गद्दार कहा गया था सीधा सीधा। तो मेरी केस उस आधार पे है, ये तो बहुत बड़ा गुना है जी। इंदिरा गांधी तो सावरकर जी का सम्मान करती ही थी, मगर वो सावरकर के कदमों पर भी चलती थी। सावरकर के जो भी राष्ट्र के हित में विचार थे, जैसा एक औद्योगिकरण देश का, क्योंकि गांधी की फिलोसफी वॉज अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेहरू जी सेना की अगेंस्ट थे, इंदिरा गांधी ने एटम बम बना के सेना को मजबूत बनाया। सावरकर जी ने जवाब दिया था जीना को, जीना ने कहा था हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। तो सावरकर ने जवाब दिया था कि एक धक्का और दो, पाकिस्तान तोड़ दो। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान तोड़ दिया 71 में। तो वो प्रैक्टिकल शी वॉज, जो अगर महात्मा गांधी का नाम भी लेती होंगी, प्रैक्टिकली शी फॉलोड ऑल द पॉलिसीज ऑफ वीर सावरकर, और उन्होंने तो पोस्ट टाइम भी निकाला था सावरकर। The Mumbai Police Crime Branch officials questioned 26/11 attack mastermind Tahawwur Rana at a National Intelligence Agency office in Delhi, officials said on Saturday. According to Mumbai police officials, Rana was questioned for 8 hours on Wednesday, during which he gave evasive answers and did not cooperate. Tahawwur Rana, a Pakistani Canadian accused of terrorism, is a former military doctor with an alleged history of involvement in terror-related activities. He was recently extradited from the United States to India. Earlier, the Patiala House Court of Delhi dismissed a plea filed by Tahawwur Rana, seeking permission to speak with his family over the phone. Special NIA Judge Chanderjit Singh on Thursday decided to dismiss his petition. Rana's legal counsel, Piyush Sachdeva, had argued that as a foreign national, he has the fundamental right to communicate with his family, who are anxious about his treatment while in custody. However, the NIA opposed the request, citing the ongoing investigation and expressing concerns that Rana might divulge sensitive information. Rana faces multiple charges under the Indian Penal Code and the Unlawful Activities Prevention Act, including conspiracy, terrorism, forgery, and waging war. The court noted that under extradition laws, he can only be prosecuted for offences explicitly sanctioned in the extradition agreement. Furthermore, since sections 16 and 18 of the UAPA apply, extended police custody beyond standard criminal procedure code limitations may be permitted due to the terrorism-related nature of the case. The Deputy Chief of the Main Operations Directorate of the General Staff of the Russian Armed Forces, Yaroslav Moskalik, died in a car explosion in Balashikha near Moscow on Friday. An improvised explosive device caused the blast and an investigation is being conducted. The explosion occurred near building number 2 at Nesterova Boulevard in Balashikha. Yaroslav Moshakilk, aged 59, represented the Russian Ministry of Defense in various negotiations.
TASS reported that the Russian Investigative Committee has opened a criminal case into the explosion under Articles 105 and 222 of the Criminal Code, murder, illegal trafficking in explosives. Investigators, analysts and emergency response units of other law enforcement agencies have arrived at the site of the incident. According to the investigative committee, the explosion was triggered by the detonation of an improvised explosive device filled with submunitions. The device had the explosive power of over 300 grams of TNT, according to emergency response officials, and its fragments will be sent for examination. Earlier in December, Chief of Russia's Radiation, Chemical and Biological Protection Troops, Lieutenant General Igor Kirillov, and his aide were killed in a blast in southeastern Moscow on Tuesday morning, state media had reported. That is all we have for now. For more news and the latest updates, keep watching Hornbill TV.